Welcome to the Wednesday edition of Market Mantra, the program in which we give you a complete update on the economic, business and stock market news of the day. I'm V. Ravi Kumar and with me is my co-anchor in Hindi, Sonu Sood. धन्यवाद रवि। नमस्कार श्रोताओं, मार्केट मंत्र में आपका स्वागत है। रोज की तरह हम आज भी आप तक आर्थिक, व्यापारिक और शेयर बाजार से जुड़े ताजा समाचार लाएंगे और उन पर चर्चा करेंगे। चर्चा के लिए ऑनलाइन हमारे साथ बिजनेस स्टैंडर्ड के एडिटोरियल डायरेक्टर A.K. भट्टाचार्य आमंत्रित हैं। मिस्टर भट्टाचार्य नमस्कार, मार्केट मंत्र में आपका स्वागत है। नमस्कार। और अब शुरुआत में हेडलाइंस जिन्हें आप तक ला रहे हैं वी रवि कुमार। Equity benchmarks log gains of around 0.5% in sync with global indices. Global stocks and crude prices rise amid hope of recovery in the pandemic-hit economies. And gold declined 614 rupees per 10 grams in the national capital. विदेशी बाजारों में तेजी के अनुरूप घरेलू शेयर बाजार लगभग 0.5% की बढ़त में रहे। महामारी से प्रभावित अर्थव्यवस्थाओं में सुधार की आशाओं के बीच वैश्विक शेयर बाजार और कच्चे तेल की कीमतों में तेजी आई और दिल्ली में 10 ग्राम सोने की कीमत में 614 रुपए की गिरावट। शुरुआत करते हैं शेयर बाजार से। घरेलू शेयर बाजार लगातार दूसरे दिन तेजी में रहे। मजबूत वैश्विक संकेतों के बीच प्रमुख सूचकांक लगभग 0.5% बढ़कर बंद हुए। शुरुआत में उतार चढ़ाव भरे कारोबार के बाद बंबई शेयर बाजार के सेंसेक्स में देर दोपहर के कारोबार में तेजी आ गई और 0.48% की बढ़त से 185 अंकों की वृद्धि दर्ज करता हुआ सेंसेक्स 39,086 पर बंद हुआ। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी 0.56% की तेजी से 65 अंक बढ़कर 11,535 पर बंद हुआ। विस्तारित बाजार की बात करें तो यहां तेजी कहीं अधिक थी। मिड कैप सूचकांक 1.26% की बढ़त में रहा और स्मॉल कैप सूचकांक में 1.66% का उछाल दर्ज हुआ। Equity benchmarks today logged gains for the second session in a row. Key indices climbed around 0.5% amid upbeat global cues. After starting on a choppy note, the BSE Sensex gained momentum in late afternoon trade before finally closing at 39,086, up 185 points or 0.48%. On similar lines, the NSE Nifty climbed 65 points or 0.56% to close at 11,535. At the broader market at the BSE, the mid-cap gained 1.26% and the small cap surged 1.66%. Mahindra & Mahindra, M&M, was the top gainer in the Sensex pack, rallying 5.8%, followed by Power Grid, Tata Steel, IndusInd Bank, Reliance Industries, HCL Tech, ONGC and Infosys. Reliance Industries jumped around 2%. On the other hand, Bajaj Auto, Asian Paints, Sun Pharma, HDFC, Nestle India and HUL were among the laggards, shedding up to 2.6%. All sectoral indices ended with gains. BSE Energy, Industrials, Power, Metal, Telecom and Tech indices rose by as much as 1.8%. Experts said domestic equities gained in sync with global stocks as European and Asian markets gained from encouraging economic data, which could be assumed as an indicator towards an economic recovery in most of the major economies. They added, border tensions with China and a weakening rupee capped the upside movement. रुपए की बात करें तो अंतर बैंकिंग विदेशी मुद्रा बाजार में रुपया डॉलर के मुकाबले 16 पैसे की गिरावट दर्ज करता हुआ 73 रुपए 3 पैसे प्रति डॉलर के स्तर पर दर्ज हुआ। रुपए में ये गिरावट घरेलू शेयर बाजार में मामूली बढ़त और डॉलर में मजबूती के बीच आई। 6 मुद्राओं की तुलना में डॉलर की मजबूती मापने वाले डॉलर सूचकांक में 0.26% की वृद्धि हुई और ये 92.58 पर दर्ज हुआ। और So, AKB, looking at the stock markets, we can see that the stock markets have been gaining for a third consecutive month. In May, I think it's ended slightly lower than the April end of around 33,000, that is Sensex. But ever since that, June, July and August have been higher. Do you expect this broad trend to continue that every month? Now it's currently even higher than what it ended August on. Almost 40,000 now. Do you expect this trend to continue? And if no, what are the reasons which could prevent it? Well, I think the trend that you just now mentioned actually has not been a linear, consistent trend upwards. It has remained very volatile. It has gone up and come down. It has taken one step forward and taken maybe a step backward. But as you are right, that it has actually moved up. And this moving up has a lot to do with what is happening in the international financial markets, which is flush with liquidity, and that liquidity is looking for more favorable markets
like the emerging economies. And India has been one of the biggest gainers of this liquidity in the last several years, actually. Actually, one study says that it is a decade-long high where Indian the foreign equity, foreign money coming into Indian markets has been one of the highest. So therefore, one factor is definitely the U.S. money coming into the Indian market. And the second factor is that a lot of the bad news about the GDP growth and everything has been actually already been discounted in a sense that it has been already been incorporated. And the third factor I find is that the U.S. money, international money that will come into the stock market will probably continue as long as the liquidity push continues till the U.S. elections. And I would say that the Indian stock markets will remain volatile, but will probably maintain their uptrend at least till November. And adding to that is the recent decisions by Supreme Court on the telecom companies, which actually have a good sentiment influencer, where the AGR, the spectrum dues will have to be paid over a period of 10 years. And that has meant a lot of relief to the telecom companies and also removed the kind of uncertainty that had gripped the market. So I think it's a combination of factors that has contributed to this uptrend in the market. But I think it will continue to remain volatile and it will be stock-specific increases. But on the whole, till November, I would say that because of foreign flows coming in, you will see the stock markets buoyant. मिस्टर भट्टाचार्य, जैसा आपने कहा कि एफपीआई यानी कि जो फॉरेन फंड्स हैं वो काफी आकर्षित है भारतीय बाजार की तरफ. इनफैक्ट अगस्त में नेट इन्वेस्टमेंट रही है $6.67 बिलियन की, जो मार्च 2019 के बाद का सबसे हाईएस्ट फिगर है. इनफैक्ट हम आपके साथ ये डिस्कशन कंटिन्यूड रखेंगे. मिस्टर भट्टाचार्य, इस बीच हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं अविनाश गोरखशेखर, जो है बाजार विशेषज्ञ. अविनाश जी, आपका बहुत बहुत स्वागत कार्यक्रम में. गुड इवनिंग. गुड इवनिंग. जैसा हम अभी डिस्कस कर रहे थे कि बाजार में अब फिर तेजी लौटी है. कल भी तेजी, परसों की जो गिरावट आई भारी, उसके बाद हमने फिर से तेजी लौटती हुई बाजार में देखी है. और अगर हम देखें तो एफपीआईज ने अगस्त में नेट इन्वेस्टमेंट करी है $6.67 बिलियन की, जो मार्च 2019 के बाद हाईएस्ट है. सो आपको क्या लगता है कि ये प्योरली लिक्विडिटी ड्रिवन है या कुछ फ्यूचर में ऐसा प्रोस्पेक्ट्स देख रहे हैं फॉरेन इन्वेस्टर्स भी एंड इंडियन इन्वेस्टर्स भी, जिसकी वजह से दोनों तरफ से पैसा आ रहा है बाजार में? नहीं, मुझे लग रहा है कि लिक्विडिटी तो मेन कारण है बाजार को चलने के लिए. हमने कल ही बाजार में थोड़ा सा बिकवाली का प्रेशर देखा था, क्योंकि इंडो चाइना का जो रिलेशंस के ऊपर जो प्रॉब्लम थे, प्लस स्टॉक मार्केट में जो नए मार्जिन के रूल अनाउंस किए थे, उसके कारण मार्केट्स में काफी भारी बिकवाली हुई. मुझे लग रहा है कि अभी भी जो ओवरटोन अंडरटोन है मार्केट का, वो थोड़ा सा कॉशियस है, क्योंकि हमने काफी इन्वेस्टर्स से और ट्रेडर्स से बात की तो हमको पता लगा है कि ये जो नया मार्जिन का सिस्टम है, इससे काफी हद तक जो रिटेल जो ट्रेडर्स और इन्वेस्टर्स है उनको थोड़ी सी दिक्कत होगी, क्योंकि मार्जिन का सिस्टम थोड़ा सा एक्सचेंजेस में सेबी ने काफी सख्त किया है. तो इसके थोड़े क्या जो इसके मेन केंद्र बिंदु आप बता सकते हैं सरल शब्दों में कि ये मार्जिन सिस्टम में क्या बदलाव हुआ है? नहीं, इसमें एक ही सिंपल बात है कि जब आप शेयर बेचते भी हो तभी भी आपको अकाउंट में कैश मार्जिन होना बहुत जरूरी है. मान लीजिए आपने रिलायंस के शेयर बेचे तो एक 20% मार्जिन आपको अपने ट्रेडिंग अकाउंट में रखना जरूरी होगा, क्योंकि जो अकाउंट आपके ट्रेडिंग अकाउंट से लिंक्ड होता है वहां पे अगर आपका पैसा नहीं होगा तो वो तुरंत बेचा नहीं जाएगा. और दूसरी बात, मान लीजिए कोई अगर बीटीएसटी करता है, यानी आज अगर कोई शेयर खरीदता है और कल सुबह बेचता है, जो अभी का अब तक का प्रिवेलिंग सिस्टम था वो अभी नहीं हो सकेगा. अगर आपके डीपी अकाउंट में वो शेयर डिलीवरी आती नहीं है तो वो आप बेच नहीं सकते. तो उसका मतलब क्या है, सेबी ने क्लियरली बोला है कि वो शेयर की डिलीवरी आपके डीपी अकाउंट में आनी चाहिए और उसके बाद ही आप उसको बेच सकते हो. तो काफी हद तक ये मार्जिन सिस्टम में जो लोगों के पास डिलीवरी भी है उनके लिए तो अभी थोड़ी सी दिक्कत हुई है, क्योंकि कैश मार्जिन अपने खुद के डिलीवरी के शेयर्स पे रखना, ये थोड़ी सी एक प्रॉब्लम वाली बात है, जो काफी बड़े और
छोटे निवेशकों के लिए अभी एक कंस्ट्रेंट हो चुका है। तो ओवरऑल ऐसा लग रहा है कि शायद एक महीने भर के बाद ये सिस्टम कैसा सेटल होता है, कैसे इन्वेस्टर्स उसको अडॉप्ट करते हैं, उसके बाद शायद सेबी थोड़ा सा इसमें रिलैक्सेशन अनाउंस करे। बट ये एक मेन कारण है कि जहां से लिक्विडिटी थोड़ी सी एटलीस्ट मिड कैप और कैश के काउंटर में जो हमने भरपूर तेजी देखी है, वो तेजी थोड़ी सी रुक सकती है, क्योंकि ये जो सेगमेंट है वहां पे ज्यादातर छोटे निवेशक, रिटेलर, एचएनआई ऑपरेट करते थे। फ्रंटलाइन कंपनीज में तो वैसे भी मार्जिन सिस्टम प्रॉपरली वेल लेड डाउन है और उनके पास फंडिंग के लिए सोर्सेज भी है। तो ओवरऑल नेट मुझे लग रहा है कि मार्केट में आज जो उछाल आया है क्लियरली थोड़ा सा शॉर्ट कवरिंग भी है, क्योंकि कल काफी लोगों ने शॉर्ट सेल भी किया था, थोड़ा सा शॉर्ट कवरिंग भी है। और ऑब्वियसली मेरे ख्याल से लोगों का मानना है कि क्लियरली जो अभी आने वाला क्वार्टर है सितंबर के बाद, वहां पे जब फेस्टिव सीजन शुरू हो जाएगा तभी अंदाजा है कि जो नंबर्स है स्पेशली सेक्टर जैसे ऑटो है, आज मारुति ने काफी अच्छे नंबर दिखाए हैं, तो कंज्यूमर ड्यूरेबल्स है, ऑटो है, आपका डिस्क्रिशनरी सेगमेंट है, तो यहाँ पे सिलेक्टिवली डेफिनेटली बाइंग आएगी ऐसा लग रहा है। तो इंडेक्स में शायद थोड़ी सी शॉर्ट कवरिंग होने के कारण ही आपको ये थोड़ा सा उछाल आज मार्केट में देखने को मिला है। हमको ये थोड़ा सा ऑब्जर्व करना पड़ेगा, क्योंकि वन वे रन अवे राइज होगा ऐसा लग नहीं रहा है, थोड़ा सा रुक के ही होगा। Avinash, there are a couple of sectors which have huge weightage if you look at the index perspective, stocks like RIL and Infosys. And if you look at broadly the sectors, we've been saying IT and pharma, and those are things that have often been trotted around. Do you think now with some RBI not as active in buying dollars, do you think there's any impact on IT or any other sectors that you see has changed from the last 2-3 months which have been in favor? I think, the rupee the dollar has become weak, and clearly, the rupee has hardened. I would believe that, especially for IT companies, most of their contracts are hedged. So that would not be a major problem. But I think clearly, from a near-term view, as long as the RBI keeps, a soft money policy, the markets are definitely not going to be immediately getting into some sort of panic mode. And I think, at least the ground level report suggests that since, capacity utilization across sectors has not crossed 70-80%, it's still about 55 to 60-odd%. There's a lot of operating leverage for, the volume growth to pick up maybe in the third quarter. The second quarter also may be a little challenging. We don't expect any big improvement in the second quarter across most of the frontline, sectors like infra, capital goods, or even automobile. I think signs of green shoots will obviously be more visible, from December. So I think this RBI, policy will be very important. And obviously, if the rupee continues to, the dollar continues to be weak against the rupee, then I think that will obviously have an impact on maybe, some of the export-oriented sectors. So net, I think the market would take some time to digest all this, and the numbers would obviously get reflected from the third quarter. अविनाश जी, आपने ग्रीन शूट्स की बात की, तो अगस्त में कुछ पॉजिटिव इंडिकेशंस आ रही हैं। आपको क्या लगता है कि बाजार के लिए क्या ये सिग्निफिकेंट होंगी? जैसे कार सेल्स में 20% इंक्रीज आया है, IHS मार्केट PMI जो मैन्युफैक्चरिंग के लिए आया है वो 52 पे आया है, जो जुलाई में 46 था। सो एक्सपेंशन ये इंडिकेट कर रहा है। पार्क कंजम्पशन, ई-वे बिल्स, नोम्यूरा बिजनेस रिजम्पशन इंडेक्स ऊपर है। सो ये सारे जो इंडिकेशंस हैं, क्या इनका भी बाजार संज्ञान लेगी और पॉजिटिव सेंटिमेंट हो सकता है? नहीं, बिल्कुल। देखिए, अगस्त के महीने में अगर हम अप्रैल टू जून के क्वार्टर की बात करें और अगस्त का डेटा देखें तो डेफिनेटली इंप्रूवमेंट हो चुका है। कंट्री की सबसे बड़ी कार कंपनी मारुति ने भी नंबर्स बहुत अच्छे दिखाए हैं। इसका मतलब प्रोडक्शन वापस रिज्यूम हो रहा है। इकोनॉमी में जो डिमांड है वो तो अभी भी थी, लेकिन सप्लाई कंस्ट्रेंट थी। तो मुझे लग रहा है कि अलॉन्ग विद ऑटोमोबाइल, मेरे ख्याल से इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर, कैपिटल गुड्स सेक्टर, मेरे ख्याल से गवर्नमेंट भी काफी पैसा खर्चा कर रही है, तो इसका भी इम्पैक्ट आपको नंबर्स में होपफुली सेकंड और थर्ड क्वार्टर में देखने को मिलेगा। और अंदाजा है कि तीसरे तिमाही में आपको पूरी तरह से ये जो कोविड का जो इम्पैक्ट था वो प्री कोविड लेवल से डेफिनेटली मैच होगा। तो उस हिसाब से मार्केट में डेफिनेटली गिने चुने जो सेक्टर्स है, कंपनीज है, वहां पे अभी भी बाइंग बड़े निवेशक प्लस रिटेल और एचएनआई इन्वेस्टर्स कर रहे हैं। बट जो फुल फ्लेज रिकवरी इकोनॉमी में आएगी वो मेरे ख्याल से आपको अगले साल ही दिखाई देगी, क्योंकि ऑब्वियसली अभी भी जो मूवमेंट हो रहा है वो थोड़ा सा स्लो एंड स्टेडी पेस से हो रहा है। और फ्रेंकली इतना डिफिकल्ट है टू एसेस करना कि सारा रिकवरी मोड 1 या 2 क्वार्टर में होगा। तो पॉसिबली दिसंबर के बाद आपको शायद ये नंबर्स थोड़े अच्छे दिखेंगे। और मेरे ख्याल से आई थिंक अभी भी जो सबसे बड़ा ट्रिगर मार्केट वेट कर रहा है वो बेसिकली कोरोना वैक्सीन पे है। वहां पे जब तक कोई
कंक्लूसिव डेवलपमेंट होता नहीं है, तब तक मार्केट वोलेटाइल रहेगा. Avinash, there's a saying in the market that buy the rumor and sell the news. We saw that probably one of the greatest drop contraction in quarterly GDP of around 24%, but yet the markets seem to have kind of totally negated that. So is it that market has possibly priced in every kind of negative news, or do you think there is still something that could probably affect the markets to move it into a downward direction? So I think the main development is that I think markets are looking forward for some sort of a vaccine possibly by November or December, and if that by that time if no vaccine comes in, then I think it would obviously make little more concerns for the market, because the markets are looking at FY22 as an earnings number now. I think no analyst on the street is factoring in FY21 numbers at all. So I think every valuation metric is based on FY22. That is point number one. And secondly, I think liquidity as a function is going to be extremely strong for the next 2 months. I think till the time we have US elections, I would not be surprised that there would be a lot of global liquidity which will be entering emerging markets like India. And the only negative surprise is after November 4, if there is a negative surprise and, if instead of Mr. Trump, Mr. Biden comes in, then there could be a major policy shift. And after that, there could be a little, kind of a shakeout in the market. So I think at least in the very near term, I don't think you're going to see a very major panic sell-off. And that is what the street is also factoring in. अविनाश जी, आपकी संक्षिप्त सी टिप्पणी टेलीकॉम कंपनीज पर, जो कल सुप्रीम कोर्ट की रूलिंग आई है 10 साल की, जबकि एक्सपेक्टेशन थी, सरकार भी चाहती थी 20 साल तक उनको समय दिया जाए. तो आपको लगता है कि कॉल्स और डेटा पे टैरिफ्स शायद बढ़ाए जा सकते हैं टेलीकॉम कंपनीज द्वारा, और क्या प्रोस्पेक्ट है इस सेक्टर का? नहीं, बिल्कुल मुझे लग रहा है कि कॉल और टैरिफ पे डेफिनेटली टैरिफ बढ़ाने के संकेत ऑलरेडी कंपनीज ने कहा है, क्योंकि ज्यादातर कंपनीज ये जो AGR का पैसा है उनको 20 साल का समय चाहिए था, उनको अभी 10 साल का समय मिला है. तो मेरे ख्याल से जो बड़ी कंपनियां हैं जैसे कि रिलायंस है, भारती एयरटेल है, इन्होंने तो ऑलरेडी सिग्नल दिया है कि टैरिफ 10 से 15 से 20% बढ़ने की पॉसिबिलिटी है. और यहाँ पे अभी भी काफी शेकआउट होने की एक्सपेक्टेशन है. जैसे कि अभी कल ही ये डिसीजन आने के बाद आइडिया ने कहा है कि वो पब्लिक इशू करेंगे या प्राइवेट प्लेसमेंट करेंगे, तो वो पैसा जुटाने की अभी बात कर रहे हैं. तो ओवरऑल टेलीकॉम स्पेस में हमको लग रहा है कि एक्शन रहेगा, और ऑब्वियसली आरपू अगर बढ़ता है तो इन शेयरों में आपको कंटिन्यूसली तेजी देखने को मिलेगी, क्योंकि यहाँ पे अभी एक डिओपोली मार्केट होने का पूरा संकेत मिल रहा है. और 2 प्लेयर अगर बचते हैं तो कहीं ना कहीं मार्केट ये फोरकास्ट करेगा कि आरपू से इनको डेफिनेटली अच्छी ग्रोथ आ जाएगी. बहुत बहुत धन्यवाद इस विस्तृत चर्चा का. श्रोताओं, ये थे अविनाश कोरक्षकर, बाजार विशेषज्ञ, जो बाजार के आज के प्रदर्शन पर हमसे बातचीत कर रहे थे. और चर्चा को आगे बढ़ाने से पहले अंतर्राष्ट्रीय बाजारों पर एक नजर डाल लें. एशियाई बाजारों में आज रुख मिला जुला रहा. दक्षिण कोरिया का कॉस्पी 0.6% बढ़कर बंद हुआ और जापान के निक्केई में 0.5% की तेजी दर्ज हुई. सिंगापुर का स्ट्रेट्स टाइम सूचकांक लगभग बिना किसी बदलाव के बंद हुआ, लेकिन हांगकांग का हैंगसेंग 0.3% और चीन का शंघाई कंपोजिट सूचकांक 0.2% के नुकसान पर बंद हुए. यूरोपीय क्षेत्र की बात करें तो दिन के कारोबार में ताजा समाचार मिलने तक यहां रुख सकारात्मक था. लंदन का फुट्सी 1.8% के उछाल पर था. फ्रांस के कैक और जर्मनी के डैक्स दोनों में 2.4% की भारी तेजी थी. If you look at the US market, the S&P 500 and the Nasdaq today hit new highs, with technology leading the charge. Better than expected US manufacturing sector data also fueled optimism about the economic recovery. In the previous session, Wall Street's 3 main indices had recorded their 5th straight monthly gain and their strongest August advance in more than 3 decades. The Dow Jones Industrial Average and the S&P 500 both surged 0.8%, while the Nasdaq Composite Index climbed 1.4%. AKB, is this a result of the higher risk appetite? Also because we keep normally talking of the equity markets, but if you look at the bond markets also, it was I remember in June the 10-year T-note was almost 0.9, then it came down to 0.5, now it's again around 0.7. So is the increased risk appetite the reason why the equity market continues to be funneled, and what would you see as the outlook for the bond markets? Well, I think if you're looking at the bond market, there is no sign that the supply of paper is going to abate in a near term.
Even if you look at the Indian the bond market, which is not very deep, even here, in spite of the government promising to come into the market and float more paper, you see that RBI with relative ease can rein in the yields and therefore can influence the overall bond market. So I think the bond market globally will be kept hostage to the government's and the Fed desire to keep the liquidity in motion, and at the same time in India that you see the bond market yields are threatening to go up, but once again in the last 2 days that we have seen that the bond yields have been reined in, largely by RBI's ability to manage the rupee in a manner that the liquidity has been sucked out of the system. So therefore, I think the bond market will remain volatile, but whether it is a question of the risk appetite being addressed, I think there is a normal tendency on the part of investors to move towards the more secure and stable instruments that offer by the debt market, and equity market by its nature is very volatile, and so therefore the investors will have to make the right kind of choices. मिस्टर भट्टाचार्य, एक और जो अभी ज्वलंत मुद्दा है वो है जो लोन्स थे जिन पे मॉरेटोरियम दिया गया था 6 महीने का, वो उस पे जो इंटरेस्ट है क्या उसे माफ किया जाए? कुछ जो डिपॉजिटर जो बोरोअर्स हैं उनकी ये मांग है, उनकी प्ली है कि उस इंटरेस्ट को वेव ऑफ किया जाए, और सरकार कह रही है कि ये डिपॉजिटर्स के लिए अच्छा फैसला नहीं होगा क्योंकि जो बैंक्स है उनकी प्रॉफिटेबिलिटी हिट होगी। तो इस ये आपको कैसा लगता है, कितना गंभीर मामला है और इसका क्या हल निकलता दिखता है आपको? देखिए, ये एक ऐसा मामला है जो हमारी देश की जो फाइनेंशियल सेक्टर का जो एक फंडामेंटल स्ट्रक्चर जो है उसके ऊपर इम्पैक्ट करेगा। जो एक लोन एक फाइनेंशियल इंटरमीडिएरी अगर लोन देती है वो एक कॉन्ट्रैक्ट है जो बैंक के साथ बोरोअर का कॉन्ट्रैक्ट है, और उस कॉन्ट्रैक्ट में एक इंटरेस्ट पेमेंट और प्रिंसिपल रीपेमेंट का दोनों कॉन्ट्रैक्ट जो है वो एकदम सैक्रोसैंक्ट होने चाहिए। हमने अभी तक जो देखा है कि कोविड के कारण अगर मोराटोरियम से डिले तो हो गया है प्रिंसिपल रीपेमेंट का, पर जो इंटरेस्ट रेट का भी अगर इसके ऊपर कोई रिलैक्सेशन या रेगुलेटरी फॉरबियरेंस किया जाए, मैं समझता हूं कि इसका जो कॉस्ट जो होगा कौन बियर करता है, ये बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट इश्यू होगा। ये कॉस्ट अगर डिपॉजिटर्स बियर करेंगे या बैंक्स बियर करेंगे, मैं समझता हूं फाइनेंशियल सेक्टर के लिए ये और एक धक्का पहुंच सकता है, क्योंकि एक बार होगा तो ये दूसरी बार होने की डर हर वक्त सिस्टम में रहेगा। और मैं समझता हूं कि इंटरेस्ट रेट के ऊपर जो डिसीजन लिया जाएगा, जो कल डिसीजन आने वाला है सुप्रीम कोर्ट का, ये कौन ये रिस्क लेगा, इंटरेस्ट का जो बर्डन जो है ये कौन लेगा? अगर सरकार लेती है वो अलग बात है, पर अगर ये रिस्पॉन्सिबिलिटी बैंकिंग सेक्टर के ऊपर आए या डिपॉजिटर्स के ऊपर आए, मैं समझता हूं कि ये एक असामान्यता का एक निदर्शन होगा, और ये हमारी फाइनेंशियल सेक्टर व्यवस्था के लिए कोई अच्छी खबर नहीं होगी। AKB, if you see, yesterday we heard news of Australia recording a recession for the first time in 3 decades because the second successive quarter, but that's the technical definition of a recession, having a negative growth. And at the same time, around the world, you're seeing the unlock or the lockdowns being relaxed. So would that relaxation of the lockdown per se kickstart the demand, which is because a lot has been done on the supply side, but the demand doesn't seem to be moving, the needle doesn't seem to be moving. Would that unlock process start across the world, the kickstarting of the demand and the growth therefore? Well, I think that globally there is now
an increasing recognition that COVID-19 is here to stay, and the response to COVID-19 is not in locking down economic activities, but in allowing economic activities in a manner that safety and health issues are taken care of. So I think globally, including in India, this lesson has been internalized and learned actually quite the hard way, because there is now a rethink that was the lockdown that was introduced in the last few months, was it worth it? After all, the economic output loss that has happened is a loss not only to the economy but also to the people, other stakeholders. So therefore, I think the lessons of a recession and the fears of recession will probably drive global authorities and the global governments, the governments of different countries, to move towards a situation wherein they can allow economic activities to continue after maintaining the safe norms of social distancing, wearing masks, and hopefully expediting the launch of a vaccine within the safe norms and the safety and the safeguards we maintain, which will probably help the spread of COVID-19. Right. The Cabinet has approved the signing of a memorandum of understanding between India and Japan for improving quality and testing of Indian textiles and clothing for the Japanese market. The MOU would enable Messrs. Nissenkan Quality Evaluation Center, Japan, in assigning Textile Committee as their cooperative testing and inspection service providers in India for textile and apparel products. The government has also approved an MOU between India and Finland for cooperation in the field of geology and mineral resources. The MOU facilitates cooperation in the field of geology, training, mineral prognostication and suitability analysis with the intent of reinforcing and strengthening scientific links. उधर केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने प्रसन्नता व्यक्त की है कि विश्व बौद्धिक संपदा संगठन द्वारा जारी वैश्विक नवाचार सूचकांक में भारत पहली बार उच्च 50 में स्थान हासिल कर पाया है। एक ट्वीट में श्री जावड़ेकर ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में न्यू इंडिया नवाचारात्मक इंडिया बन रहा है। भारत का स्थान इस सूची में 2015 के दौरान 81 पर था, जो 2020 में बढ़कर 48 पर आ गया है। ब्रीफली बताएंगे कि ये जो ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स है, इसमें बढ़ना कितना सिग्निफिकेंट है? देखिए, हमारे देश में जो प्रोडक्टिविटी गेन्स होती है बहुत कारणों से, पर एक कारण है कि टेक्नोलॉजी और इनोवेशन के ऊपर अगर हम इनोवेशन इंडेक्स में आगे आ सकते हैं, मैं समझता हूं कि जो हमारी जो प्रोडक्टिविटी जो है वो और भी बढ़ेगी और टेक्नोलॉजी और इनोवेशन के द्वारा। तो ये एक हमारे लिए खुशी की बात है कि हम इनोवेशन इंडेक्स में हमारी मेक इन इंडिया जो मैन्युफैक्चरिंग, जो हमारी प्राउस जो है, उसको और भी बढ़ावा दे सकती है। Let's look at the oil market. Oil prices today rose for a third day in a row, supported by hopes of a recovery from the coronavirus pandemic and fall in U.S. inventories. In intraday trade, Brent crude prices were trading around $45.80 per barrel, while WTI crude prices were around $42.90 per barrel. उधर दिल्ली सराफा बाजार में सोना 614 रुपए सस्ता होकर 52,314 रुपए प्रति 10 ग्राम पर आ गया। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कमजोरी के अनुरूप भारतीय बाजार में ये गिरावट आई। चांदी भी 1,799 रुपए लुढ़ककर 71,202 रुपए प्रति किलो पर आ गई। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में सोना मंदी के साथ $1,963 प्रति आउंस पर था और चांदी $27.87 प्रति आउंस पर थी। AKB, quick comment on gold prices. Both gold and silver saw their highest prices in 2011, but gold is around the same level today, but silver is almost half. How do you see the bullion prices moving in the next few years? Well, I think gold has seen a big rise in the last few months, and I think this is a sign that investors are looking for a more secure and safe investment platform. They are not, many of them are not really happy with the kind of volatility that the stock market is exposed to. समय समाप्त हो रहा है, तो जी मिस्टर भट्टाचार्य, हमें चर्चा को भी यहीं समाप्त करना होगा। बहुत बहुत धन्यवाद आपका शामिल होने के लिए। नमस्कार। Thank you, AKB. Before we close, a reminder of the headlines. Equity benchmarks log gains of around 0.5% in sync with global indices. Global stocks and crude prices rise amid hope of recovery in the pandemic-hit economies. And gold declined 614 rupees per 10 grams in the national capital. That's all we have in this edition of Market Mantra. Namaskar.